Hi everyone, am I audible? Hi everyone, it's Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul and fantastic to have you all here. Are you able to hear me out loud and clear? Gautam, Kashyap, Shreyashi, Deepak, every one of you, Sunny, Jatin, आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे? I'm just checking if you are. Just a second. Lovely. If you are able to do that, and how are the short videos? How is the Nifty level working for you all? Is it working like magic? Yes or no? Is what I want to know. कि आप अगर निफ्टी लेवल्स को देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, मॉर्निंग के वीडियोस, मॉर्निंग के ट्वीट्स और साथ ही में शॉर्ट वीडियोस 1 1 मिनट के मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। द लेवल्स आर वर्किंग लाइक मैजिक। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, निफ्टी कोई भी डायरेक्शन में जाए, लेवल्स are working in either direction despite of the event, and it's simply fantastic. People who are there on YouTube, I'm just sharing across the link with you all. Ensure you are joining me on the Zoom platform. ये रही लिंक एंड यहाँ पर आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो very clearly, and I just want to know if you are also able to see me out. We are touching that nearly 90,000 mark on the YouTube. That is fantastic, guys. And every one of you, it is really amazing. Glad to know that. तो चलिए दोस्तों, आज की हम बात करेंगे मार्केट्स की, और वी विल ऑल्सो लुक एट वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल्स, बट साथ ही में बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में. Why the options are such an important instrument. Before I move on to the options, I want to take a very quick poll just to ask if you are an option trader. I am asking every one of you, are you an option trader? You can mark it yes or no in the poll which I am taking right now. And बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ऑप्शंस में ट्रेड करना. और ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना ही है, लेकिन if we have an instrument and we do that, then why not look at options and do that यहाँ पर. So how are options such an important tool, and why we have to look at it? And also, do you see the power of time cycles? I tweeted across 3 days back that we should be up in 3 days of time, and the bulls are running out of time. 3 दिन में market is going to reverse back on the upside is what I tweeted across. It has obliged within that 3 day time frame by turning up and rallying by 700 points from the low. It has done fabulously well. ये पोल में एंड करो, बहुत सारे जन ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब नोट करना, बहुत जन ऑप्शन में ट्रेड करते हैं. So markets have bounced back precisely from the time cycle period. That time cycle period, I'm just going to show you to you on the chart very quickly, and then I'm going to go up ऑन ऑप्शन स्ट्रैटेजी. पहले तो मैं ये बात करूंगा ऑप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है और वो सारी चीजों के बारे में ये चार्ट दिखाने के बाद. दैट्स द चार्ट आई एम शोइंग इट अक्रॉस टू यू ऑल. This was the tweet. Nifty ready to reverse up in 3 days. Was done on 3 days prior, which was थर्सडे की क्लोजिंग पे. फ्राइडे को नीचे गया, मंडे लो बना, एंड इट रिवर्स बैक. सिंपली सुपर, simply super. And the auspicious time worked out brilliantly well. So the level is 22,950. Are we out of the woods? War is over? Nothing has changed. Nothing is over. It is just the power of time as of now. और अगर 22,950 ब्रेक हो गया अभी तो गड़बड़ हो जाएगी. नाउ दिस लेवल इज द की at most important level that should not be broken in for next 5 days of time. 5 days बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, क्योंकि जितने बार भी पुल बैक निफ्टी में आया वो कितने दिन का आया है, कोई बताएगा? आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट गाइस. हाउ मेनी डेज ऑफ पुल बैक आर यू सीइंग इन द मार्केट, वेदर इट इज इन दिस फॉल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? कितने दिन का पुल बैक आ रहा है? एक ही दिन का आ रहा है. दिस इज 1 day ऑफ पुल बैक वेर मार्केट क्लोज्ड अबाउट द प्रायर डे हाई, रिवर्स डाउन. दो भी नहीं है, एक दिन का है, एक ही दिन का है. This is 1 day of pullback where market closed above prior day high, reversed down. This is the pullback where market closed above the prior day high. मतलब अभी रिवर्स नहीं होना चाहिए. At least we should not reverse tomorrow. Then we can say this is a sensible pullback that we have started seeing now. But
बहुत सारे हर्डल है, ऊपर जाना आसान नहीं होगा अनलेस इट गोज अप विद अ गैप एंड मोमेंटम स्पीड। सो ऊपर जाने के लिए बहुत सारे हर्डल्स हर एक लेवल पे बने हुए मार्केट में। सो व्हेन आई से दैट, बिकॉज दिस इज अ मेजर हर्डल, सी दिस, इट्स अ मेजर हर्डल, दिस इज अ मेजर हर्डल, हर एक लेवल पे हर्डल है मार्केट के लिए। दिस इज अ मेजर हर्डल, सो देर आर हर्डल्स एट ईच लेवल ना। जब मुझे पता है कि हर एक लेवल पे मार्केट में हर्डल है, ऊपर जाना आसान नहीं होगा, ऑप्शन ट्रेडर्स, आई एम आस्किंग यू ऑल, जिसे ऑप्शन सही मायने में आता है एंड जो ब्रह्मास्त्र के पार्ट है या त्रिशूल के पार्ट है, आई एम आस्किंग यू, जो पास्ट में कर चुके, these are major hurdles. So what will you do in options so that your your trading is optimized? ऑप्टिमाइज्ड करने के लिए क्या करेंगे आप? स्प्रेड बनाएंगे। फैंटास्टिक रनिंदो रश्मित, स्प्रेड बनाएंगे। नरेंद्र मुलानी, ग्लैड टू सी आफ्टर लॉन्ग टाइम। रवि, बिल्कुल सही कहा आपने, बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देखने के बाद रिस्क रिवॉर्ड फिट होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। और आप ये देख ही पा रहे होगे पावर ऑफ टाइम। कौन सा पावर ऑफ टाइम है? बिकॉज only if you are trading into options, you looking at time cycles, you are making the most of everything. Looking at time cycles के अलावा एक और मेथड है जो बहुत ही जबरदस्त चलता है, which is combination of Keltner channel with KST, provided the daily trend is changed on the upside. So that is the combination. Keltner and KST is one of the brilliant combinations that actually वर्क। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना। आ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चार्ट दिखा रहा हूं आपको विद द टाइम साइकिल। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज अक्रॉस माय स्क्रीन, आई एम जस्ट शेयर इट अक्रॉस विथ इज वेर इज माय टाइम साइकिल? कैन यू सी द पावर ऑफ टाइम? यू नो वी टॉक्ड अबाउट द टाइम of 11 a.m. 11 a.m. 16th March 11 a.m. as the time. And can you see its power? What a move. What a move. 700 points of move. Now, when you're an option trader, so the next time is going to be again soon, but we'll have to see price action with option trading with risk reward setup. पूरे सब चीज को कंबाइन करना है, खाली टाइम को नहीं देखना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है। टाइम भले ही सही है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड, दैट इज द की, दैट इज द की। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई विल कम बैक टू द ओरिजिनल चार्ट अगेन। Now, if I have to derive the risk and reward setup, simply look at it. Simply, the gap area acts as a hurdle. So this is a hurdle for markets to go up. If it manages to go up, the next hurdle is at 23,840 levels. So hurdle कहां पर है? 23,840. So पहला hurdle था 23,650, जो gap area था, वहां पर हम आ चुके। Now my strategy is, if we manage to go back above this level, I might want to aim only for a minor 23,820 level. ज्यादा दूर नहीं, हम we are taking one step at a time, not multiple steps at a time. Now in this method, if I have to combine Keltner and KST, let me go back to this chart and introduce two major indicators that you cannot ignore at all. I'm going to put across an indicator which is known as KST. बहुत समय के बाद में मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, because now the strategy is prudent for that, and इसमें एक और strategy मैं डाल रहा हूं, Keltner channel. केल्टनर एंड केएसटी, केल्टनर का सेटिंग है 20 एंड 2 का, केएसटी का डिफॉल्ट सेटिंग है, वही हम यूज कर रहे हैं फिलहाल। नाउ इस सेटअप में you have to combine both of these things together, either on the buy side or the sell side, along with time cycle. Keltner is a different indicator as compared to Bollinger Bands. Bollinger Bands indicator जो होता है दोस्तों, it is made up of two standard deviation. Keltner जो बनता है indicator, it is made up of not only two standard deviation, it is made up of ATR. ATR is known as average true range.
Okay, Sandipan carry even in this lackluster market time cycle delivered amazing. Thanks Ashish sir. Thank you very much. So यहाँ पर ATR पता है आप लोगों को, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ATR इज एवरेज ट्रू रेंज विच इज अ प्रॉक्सी फॉर टाइम, प्रॉक्सी फॉर द वोलेटिलिटी। मतलब अगर मार्केट की वोलेटिलिटी के बेसिस पे ATR डिराइव होता है। इफ द वोलेटिलिटी इज हाई, if the volatility is high, market goes, option price increases or decreases. I am asking you, volatility अगर बढ़ेगी तो option price बढ़ेगा कि कम होगा? Guys, tell me one simple question. I am asking. देखते हैं किन किन लोगों को ऑप्शन स्ट्रेटेजी बहुत ही सही तरीके से पता है। ऑप्शन प्राइस विल इंक्रीज if volatility will go up. Why will option price increase because of increase in the volatility? Can someone tell me? ऑप्शंस प्राइस इसलिए इंक्रीज होगा बिकॉज बिकॉज व्हाट इज वोलेटिलिटी, समझते थोड़ा सा। वोलेटिलिटी मींस मार्केट 100-200 पॉइंट इजीली ऊपर नीचे कर सकता है। दैट इज हाउ वी नो आईवी, implied वॉल। Markets can do 100 points up and down very very easily. That's what implied wall actually talks about. So when the volatility is high, which means chances of achieving that target is more, chances of going up and achieving the target is more, or chances of achieving the stop loss is also more, which means the risk is more. If the risk is more, the option premium will be more. Option premium will be high because the risk or the chances of movement is much more. आज से 2 हफ्ते पहले, 17 days prior, when the war did not start, that time volatility was very less. Implied vol was as low as 12. Now the implied vol has gone to as high as 30, 35. So chances of movement increased and so option price increases. Now when this happens, there are powerful indicators that you have to combine in order to check that. What are those powerful indicators? I'm going to tell you. Simple powerful indicators when you are trading in options. First one, volatility check करने के लिए you have to use a indicator which is known as Keltner channel. क्योंकि Keltner channel is basis of average true range. Average true range is a proxy of volatility. तो Keltner channel एक powerful indicator है। दूसरा चीज जो आपको चेक करना है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको, is known as KST. अभी आप लोगों ने सभी ने पावर ऑफ टाइम साइकिल देखा, ठीक है? पावर ऑफ टाइम साइकिल आपने विटनेस किया एंड यू आर क्लियरली सीइंग हाउ दिस पावरफुल टाइम साइकिल इज वर्किंग वेल. नाउ KST is a proxy for time cycle. KST is a proxy for time cycle. If you look at KST method, from here, from this cycle, market went up. This was market went up. And we can clearly see that over here swing low was broken, over here swing low was broken, over here swing high was broken. That is what you have to witness. So when KST is gaining momentum, which means when KST and Keltner channel both are in sync, we get classic entry. Are there past participants? Are there Brahmastra participants? I am asking you one simple question basis of KST. Simple question I'm going to ask you basis of not KST, Keltner channel. Was there any kind of a buy setup? This is for positional trade. I'm asking you all. Was there any kind of a buy setup until this candle as per Keltner channel? As per Keltner channel, past participants of Brahmastra and Trishul, I'm asking you all. Nahi tha. Which means, can I say that something major is changing now? Can I say that something major is changing now? यहां पर, are you with me? So this candle is showing us the first sign on how, what basis? Keltner channel. आज तक जो रेंज था मार्केट का वो नीचे साइड ब्रेक दे रहा था. ये कैंडल इज नॉट वैलिड. देयर इज अ रूल, आई एम नॉट टीचिंग दैट, विल डू दैट इन त्रिशूल. यहां पर
ये नीचे साइड दे रहा था, नीचे साइड दे रहा था, नीचे साइड दे रहा था. ऑल द ब्रेक्स दैट हैपेंड was below the channel. Can I say this is the first time the break has happened above the Keltner channel? Which means, can I say something might be changing? This can be an early sign, not a signal right now. This can be an early sign and not a signal. I'm not confusing you. I'm just saying that it's time to get alert कि भाई नीचे का ट्रेंड शायद मेच्योर हो रहा है, शायद मेच्योर हो रहा है. एंड मोमेंटम के लिए हम मेजर करते नीचे के एस टी. दिस इज द के एस टी इंडिकेटर विच इज अ वेरी ब्रिलियंट इंडिकेटर. नाउ इसके साथ हमें एक और चीज को कंबाइन करके देखना है. इफ आई वांट टू कंबाइन ऑल ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर, आई कैन नॉट जस्ट कंबाइन. I have to also check where is the volume happening. When we are looking at this entire picture, we need to see where is this volume happening, major volume. अगर मैं volume chart पे जाके देखता हूं, so I'm showing you the power of different tools combined together having its own method. Keltner is helping us to take a signal. KST is helping us to take momentum. Volume is helping us to understand the big players activity. बड़े लोग कर क्या रहे हैं यहां पर, वो मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल से पता चलता है. People on YouTube, are you understanding? I'm now going to go on volume profile and see it on the chart. Ki where is this volume happening? Are you able to see the screen here? I'm opening up my volume profile chart. I'm going to come here. And we are going to see volume profile. So यहाँ पर this is Nifty futures and the volumes. I'm going to load it across for you all. We will see where is exactly the big players volume happening. Let me just remove this. Okay. कहां पर बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बनाई है, कहां पर वॉल्यूम हो रहा है, ये सारी चीजों को देखना है मुझे, यहां से पता चला. नाउ if I'm looking at this chart, this is a scattered volume. This is not showing any systematic volume that has taken place. It shows more of a scattered volume, which is not a good sign. It shows confusion. It shows people are not sure where it's going to go. Can you see that? There is spike in the volume. Major volume happened here, volume here, volume here, volume here, which is the reason why I'm saying there are hurdles at every level. यहाँ पर hurdle है, volume hurdle. This is the major hurdle of volume that we see here at this level, which is far away for now, but major hurdle है. ये आवरली चार्ट पे हमें दिखा है. मैं डेली चार्ट पे देखना चाहता हूं कि कहां पर नीचे एक्यूमुलेशन हुआ है, बड़े प्लेयर्स ने क्या किया. सी, इवन इफ यू डू नॉट ट्रेड इन ऑप्शंस, यू नीड टू नो what are these big players doing, where are they accumulating, where are they buying, what are they doing. So for that we need to look at volume profile, the right hand side. आज तक वॉल्यूम प्रोफाइल आप नीचे देखते थे, नीचे के साइड. फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग यू द वॉल्यूम प्रोफाइल which is on the right hand side chart. Now when I see this volume, this is a daily time frame chart. Okay, I'm going to show you on a daily time frame chart. If I see this, the major volume that has happened is in the range of 22,600. यहां पर ज्यादा कोई वॉल्यूम्स नहीं है. ऊपर में वॉल्यूम आता 24,500 जो हमने अवर्ली चार्ट पे भी देखा, which means we are in a zone where nothing major has happened. I'm going on a 1 hour chart now. We will look at 1 hour time frame chart just to see, just to get some hint about volumes again on 1 hour time frame chart. If I look at 1 hour time frame chart, I'm going to ask you, these are volume at price. Okay, this is where, is there any major volume that you see in this blue zone? Anything that has happened majorly in this blue zone? There is no volume. This entire blue zone means no volume. No one is trading much here. The volume is dead. So is there an accumulation? Accumulation मतलब क्या होगा? बड़े players अपनी positions बनाना शुरू कर रहे हैं.
Is there an accumulation yet? Looking at the volume profile, I'm just asking again. Looking at the volume profile, do you think there is an accumulation where the volumes are substantially much bigger? No. If there is no accumulation, the market is bouncing back on the upside. Can I say it is not reliable as of now? Can I say reliability नहीं है? वॉल्यूम नहीं हुआ है, बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेट नहीं किया है, गड़बड़ है, गड़बड़ है. What is the blue zone? What is the green zone? I will not be able to explain it to you now detail meaning. This is 70% of the volume. This is 30% of the volume area. But detail meaning वो बहुत important है. This is known as volume profile, point of control. This is known as these are the 70% of the volume data that happen. Value area high, value area low. मैं उस डिटेल में जा ही नहीं रहा हूं फिलहाल. मैं उस एक्सप्लेनेशन में जा ही नहीं रहा हूं. मैं तो खाली सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं. ये पूरा फॉल वॉल्यूम के बिना हुआ है. कैन यू सी दैट entire fall that has happened post 24,600, there are no volumes happened, which means there is no accumulation, there is not much of a sell off. Market can move violently in this range, which means it can move very sharply in this range because big players ने अपनी positions नहीं बनाई. What range? This is the range. अब ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई. ओके 24,400. अभी कहां पर वॉल्यूम हुआ है वो देखते हैं. नाउ look at the difference. Now I'm going to ask you a simple question. Can I say huge volume has happened at 24,800? Yes or no? You have to participate, guys. I'm just asking you one simple question and you have to participate. 24,800. ठीक है, that's the level. Exact level spot पे क्या आएगा बोलेगा कोई? 24,728. याद है क्या? ये लेवल भूल गए? Okay, this is known as volume point of control. 24,728. The magnet was the ultimate support level. Once that was broken, nothing stood ahead of the crash. So Nifty broke. नहीं, broke तो बहुत दूर हो गया. जो लोग Nifty is moving with low volumes and prices are yet to show accumulation pattern. This indicates movement can be violent but classic opportunity for intraday option traders. ओके, यहां पर वाई यहां पर अगर आप देखोगे 24,728 जब तक निफ्टी नहीं निकालता है, यहां पर आपको कोई भी मूवमेंट मिलता है उसमें स्कैल्प करना है unless we start seeing build up in volume. The moment I start seeing these volumes have started increasing sharply around this area, can I say accumulation start हो गया? Once I know accumulation start हो गया है, can I start cherry picking my stocks from the portfolio which are bleeding? Are you with me? Can I start picking up my stocks which have started showing good volume? समझो निफ्टी पे नहीं हो रहा है, समझो निफ्टी पे नहीं हो रहा है यहां पर, लेकिन अगर मेरे स्टॉक्स में सपोज इफ आई एम ट्रेडिंग इनटू रिलायंस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जो भी स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा हूं, इफ आई स्टार्ट सीइंग मेजर एक्टिविटी हैपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज, कैन आई से नाउ इट इज शोइंग मी अ ह्यूज बिल्डअप. सो मैंने किया क्या? पहले तो मैंने मार्केट पे सिग्नल देखा. कैसे देखा? कैल्नर चैनल के बेसिस पे समथिंग इज चेंजिंग. देन आई लुक्ड एट केएसटी, मोमेंटम है.
केएसटी का एक वे है देखने का, मोमेंटम है। देन आई लुक्ड एट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है, मतलब 3 इंग्रेडिएंट में से 2 है, तीसरा इंग्रेडिएंट नहीं है, विच मीन्स गड़बड़ फिलहाल है। Now, the fourth ingredient that you have to look at is known as open interest profile. Open interest profile. Open interest is a very, very powerful profile. Open interest profile क्या होता है पता है आपको? Open interest क्या होता है? Open interest helps us to understand where is the activity happening. Now the problem is expiry आज ही थी, तो इसलिए ये प्रोफाइल का वैल्यू क्यूमुलेटिव पे नहीं होगा, नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पे। अभी नेक्स्ट वीक का जो ओपन इंटरेस्ट में अगर देखूंगा, this is next week open interest profile, and if I'm looking at next week open interest profile, let me hide across volume. Do you see any significant build up in the open interest? That's only at 23,500 where I see 570,000 and 600,000, nothing major. मतलब यहां देखोगे तो 5.98 मिलियन था, 59 लाख था, उसके सामने यहां पर मेरे पास 500,000 है, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो ऑब्वियसली, बट 500,000 है, बट नथिंग मेजर हैज हैपेंड एनीवेयर। 23,000 के ऊपर मेरे पास पुट पे 42 लाख है, मतलब 23,000 इज क्रूशियल नाउ, बट दिस डेटा कैन चेंज वेरी फास्ट, दिस डेटा कैन चेंज वेरी फास्ट, but nothing exceptionally happening here. So what does it indicate? The big players are not getting aggressive in this market. Big players अपनी positions नहीं बना रहे. Now suppose tomorrow or day after I start seeing huge build up in put options OI. This is known as open interest profile. ये open interest profile है. If I start seeing huge open interest build up in options OI profile, in which direction you expect a gap to happen? I'm asking you. In which direction? अगर पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शार्पली चालू हो गया, कैन आई से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ गैप अप नाउ? By looking at volume profile, open interest profile, can I predict gapping action in market now? Gapping action. लेकिन अगर गलती से कॉल साइड का ओआई बढ़ना शुरू हो गया, कॉल साइड का ओआई बढ़ना शुरू हो गया, then I can say that market is now going to move down again. These data of options trading is extremely crucial. And so I tell every single one of you who are here with me, you need to know options profile, open interest profile, volume profile. ये methods आपको ऑप्शन ट्रेड करने के लिए नहीं चाहिए. These methods that I am showing it across to you, you need these methods to identify the big player activity behind the scene. I'm going to ask you a simple question here. If you have $1 million to deploy on a strategy, options या जो भी है कैश में या चाहे कहीं पे भी, if you have to deploy that strategy, will you not try to create strategy around options? Big players, you have all the tools, you have the sophisticated methods. Will you not try to use options instrument? Do you think any hedge fund, big player, do not use option instrument? No, they do use option instrument. Also, the volumes that नीचे दिखते हैं ना जो volumes, वो तो सारी दुनिया देख रही है. राइट साइड वॉल्यूम देखने के लिए किसने बताया था आज तक आपको? यू नीड टू सी द राइट साइड वॉल्यूम. नीचे का वॉल्यूम तो सभी लोग देख रहे हैं. राइट साइड वॉल्यूम इज व्हाट यू हैव टू सी. केल्टनर चैनल गिव्स यू दी ब्रेकआउट कितना वोलैटिलिटी है. वोलैटिलिटी इंपॉर्टेंट है करंट मार्केट सिनेरियो में. आई एम आस्किंग यू, कैन आई से वोलैटिलिटी इज क्रूशियल इन द करंट मार्केट सिनेरियो? And then combining with that volatility, if you can understand along with that where is the momentum, and if you're an options trader, combining OI profile, volume profile, KST, Keltner channel, big players activity की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, becomes extremely brilliant. And then you go on the chart after this context of the market,
You then go on the chart and understand what is my time cycle suggesting, what is happening around on my daily time cycle basis. You will see superb time reversal areas, superb time reversal areas. And Rajesh Lekre sir, you mentioned 17th March, important date, as you said last week. See the rebound today. Yes, exactly. I'm saying. So यहाँ पर सुपर ट्रेंड, एक और इंडिकेटर की मैंने बात की थी एक वीडियो में, देखना चाहते हो आप सुपर ट्रेंड 10 और 3 का एक रीडिंग मैंने बताया था, सुपर ट्रेंड 10 और 3. Anyone, are you guys understanding what I'm trying to show you across? You will be shocked what I'm telling you across. आप अगर ठीक से समझते हो जो मेथड्स मैं आपको बताता हूं, you will be shocked. Look at this. मैं चैनल को हटाता हूं just to make it simple. Now this is super trend. What is super trend? I'm not teaching you that now. 10 and 3. किन किन लोगों ने वो वीडियो देखा था, ट्विटर पे डाला था मैंने और यूट्यूब पे भी. गाइस ऑन यूट्यूब डू इंश्योर टू आप ज्वाइन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो. सुपर ट्रेंड की रीडिंग क्या थी मैंने कहा था आपसे, देखते हैं. आपने देखा था प्रदीप, संजय, भरत, आनंद. सुपर ट्रेंड की रीडिंग के बारे में बात किया था मैंने, आपको कहा था एक रीडिंग डालना सुपर ट्रेंड पे. जब ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा कुछ चेंज हो रहा है. 10 and 3. 10 and 3. You know, when I posted across that Nifty is going to bounce back in 3 days last week. Nifty is going to bounce back. Time is running out in 3 days of time. Nifty is going to turn up, is what I mentioned. लोगों के कमेंट क्या आए थे, बेवकूफ हो क्या, वॉर चल रहा है पता नहीं है. मैं बोला ठीक है, एवरीवन बो डाउन टू एवरीवन. भाव भगवान छे, समय बलवान छे. विल सी. कैन यू सी, कैन यू सी द पावर? निफ्टी डिड बाउंस बैक. कैन यू ऑल्सो सी फॉर द फर्स्ट टाइम ये पूरे के पूरे फॉल के अंदर, पूरे के पूरे फॉल में, from the fall started from 25,400 level, 25,400 level. Can I say पहली बार निफ्टी ने सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद किया. Can I say that something is possibly changing? Do you agree with me? Say yes or no. You can disagree with me. Can I say for the first time since Nifty closed about the super trend of 10 and 3, ये सारे टूल्स मैं आपको थोड़े थोड़े करके दे रहा हूं लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो. Can I say that something is changing now? Something is changing now, which means there is a possibility that we can start seeing an accumulation now, which means unless and until 22,950 breaks, market can start showing consolidation pattern. हो सकता है यहां से हम नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए. So we might possibly consolidate is what I'm saying. I'm not saying ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे. It completely depends. I'm a day trader now. I'm an intraday scalper now. But once I start seeing this, tell me what will I see on volume profile and open interest profile? क्या दिखना चालू होना चाहिए मुझे? What all things shall I start seeing? Nifty for the first time since the top of 25,600 levels, दोस्तों 25,600 levels has managed to close above hourly super trend and something major is now happening. Is it time to get ready, guys? Are you with me? समझ में आ रहा है? Which means for the first time something is changing. मैं ये नहीं कह रहा बेरिश का बुलिश हो जाओ. आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर बेरिश स्टे बेरिश. आई एम नॉट सेइंग यहां से समथिंग प्राइस एक्शन हर्डल है हर एक लेवल पे. मुझे पता है वॉल्यूम्स थिन है, मूवमेंट मेजर हो सकता है, वो पता चल रहा है. ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल विल हेल्प मी टू प्रिडिक्ट गैप्स. सुपर ट्रेंड विल हेल्प मी कौन से डायरेक्शन में होगा, वॉल्यूम से पता चलेगा मुझे. तो ये चीजों को कंबाइन अगर आप कर सकते हो,
Can I see the true, can I unleash true power of trading? If I understand these mechanics of market, this is the major level that I am looking at. इसके ऊपर अगर चला गया मार्केट, जबरदस्त 23,800 मेरा लेवल है, इसके ऊपर अगर चला गया तो दुनिया कुछ भी कहे, थिंग्स आर चेंजिंग। नीचे का लेवल है 22,950। ये दो लेवल पे आपको देखना है बहुत क्लियरली। समझ में आ रहा है आपको? एवरी वन ऑफ यू, इज इट इंटरेस्टिंग व्हाट आई एम शोइंग यू राइट नाउ? इज इट डिफरेंट व्हाट यू आर सीइंग? दिस इज व्हाट is and in about options, so people who fear options, यहां पर you have to understand this method, you have to learn this science। यहां पर आप देख पा रहे हैं, एवरी वन ऑफ यू समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चले आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर बहुत क्लियरली हमने ये देखा कि कैसे हम ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बेसिस। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन अगेन। मैं फिर से रिपीट करता हूं संक्षेप में, मैं बहुत ही क्लियरली, संक्षेप में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, if you have these tools and techniques to apply it correctly, which is looking at these five mantras, which I call as option mantra, five mantras of options, looking at price action, bhav bhagwan chhe, that's first mantra, that's the first mantra। Secondly, looking at the simple concept of volatility by looking at Keltner channel, the second mantra, looking at KST, the momentum of in an option trading, the third mantra, looking at volume and open interest profile, the fourth mantra, and looking at super trend, the fifth mantra. Can I say that with these simple rules, will your life becomes easy or difficult to trade? If I do that, will your life becomes easy or difficult when you are trading using these concepts? Using these concepts, shall we look at it? It will become easy, it will become predictable, it will become, यार पता चल रहा है, जहां सारी दुनिया उल्टा देख रही है हम व्यू चेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई 99% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग बिहाइंड द सीन्स, दे आर ओनली स्टक इन हैंगिंग मैन और हैमर, they are not understanding the market context and then applying these methods। So are you all willing to learn these methods? Are you there ready to learn these methods? और इसके साथ अगर वेव थियरी, Elliott wave, Neo wave with Ichimoku cloud, if I combine together, the forecasting ability that you get is beyond words. Beyond words. So, guys, you can learn this science. There were many of you who were saying that I'm not able to join mentorship because of whatever reasons. So we have launched a Trishul program. Link आपके साथ share होगी यहाँ पर अभी। we are launching, कौन सा पांच मंत्र मैं फिर से आपको बताऊंगा, त्रिशूल प्रोग्राम। डायरेक्टर साहब बीएमडब्ल्यू की लिंक शेयर करना। यहां पर हम सिंपल वे से इन मेथड्स को कंबाइन करना देखने वाला है, विच इज नोन एज बीएमडब्ल्यू ऑफर। आई एम गोइंग टू सिंपली आस्क यू अ क्वेश्चन हियर। दिस बीएमडब्ल्यू ऑफर, बीएमडब्ल्यू इसलिए हम कहते हैं बिकम मार्केट विजार्ड, सो आई हैव नेवर चेंज्ड दैट नेम। त्रिशूल मीन्स थ्री, तीन चीज को त्रिशूल कहते हैं। त्रिशूल इज ऑल्सो शंकर भगवान का, आपको पता ही है। ऑप्शंस मंत्र पहला, एलियट वेव दूसरा, एंड नियो वेव तीसरा। नाउ ऑप्शंस मंत्र को हम ओम कहते हैं, एलियट वेव प्लस नियो वेव को हम सूत्र ऑफ वेव्स कहते हैं। सो जिसे बीज बोना हम कहते हैं, उसे सूत्र ऑफ वेव्स कहा जाता है।
सो यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शंस मंत्र प्लस एलियट वेव प्लस सूत्र ऑफ वेव्स लिखना चाहिए, जिससे लोगों को सो मीन्स बीच बोना, तो दैट्स ऑप्शंस मंत्र। आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी क्विक पोल यहां पर। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दिस साइंस of trading by combining these concepts of options, combining it along with strategy? Simple way, मैं ये नहीं कह रहा आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, but a very very simple way of trading यहां पर। एंड कौन कौन है जो यहां पर ये चीजें सीखना चाहते हैं? यहां पर कौन कौन है जो इन चीजों को पढ़ना चाहते हैं? अगर आप चाहते हो यहां पर, so you have to be a part of Trishul program. What all things will you use in Trishul program? What all things we are going to do in Trishul program? We are going to be looking at, very simply, we are going to have an options mantra, which is going to be on 11th, 12th of April. 2 days of program. It's 10 to 4. उसके पहले आपको बहुत क्लियरली बेसिक्स सीखने के लिए वीडियोस दिया जाएगा, वीडियोस दिया जाएगा यहां पर। एंड यहां पर आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक पोल जस्ट टू अंडरस्टैंड विच पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो हमारा सेकेंड 11th और 12th अप्रैल को 2 days ऑफ ऑप्शंस मंत्र होगा। उसके बाद में वी आर गोइंग टू गिव यू एक्सेस टू एलियट वेव वीडियोस। उसके बाद हमारा सूत्र ऑफ वेव्स होगा। फिर हमारा Q&A सेशंस होगा। You will be getting access to Master of Technical Analysis video today, which is of 12 hours. You will be getting 10 bonus videos for lifetime. अब इसमें हम करने क्या वाले हैं? यहाँ पे मैंने पोल लॉन्च किया दोस्तों। Ensure you are participating in the poll. Which path to financial freedom? You can register for Trishul program today under the early bird offer of 32,000 plus taxes. Along with that, we are giving you a membership in just 251 rupees. In this membership, you get 3 months of Nifty research report, you get 3 months of Bank Nifty research, you get 3 months of AK indicator. This is a separate price because it falls under advisory, so we are taking it separately as 251. You get that under Trishul membership. Trishul membership, this program is जो भी यहाँ पे costing है, it is worth itself 20K plus, but I am giving it to you away in just 251 rupees. If you are a part of the Trishul program, then this is what I am giving it away. EMI की लिंक आप EMI में से भी पे कर सकते हो। अभी ऑप्शंस में हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज त्रिशूल? त्रिशूल कंसिस्ट ऑफ ऑप्शंस मंत्र प्लस वेव थियरी, एलियट वेव प्लस सूत्र ऑफ वेव्स। Options is Om. What are we going to learn in options mantra? We will be looking at this Pach mantra, Keltner channel, price action, KST, super trade, trading system, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ये 5 मंत्र हम करने वाले। ऑप्शंस मंत्र में लाइव सेशन होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा, हिस्टोरिकल चार्ट पे हम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्लियरली। प्लस वी विल बी लुकिंग एट एक्सपायरी डेट ट्रेड सेटअप। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू जनरेट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बाय ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस, then you have to be a part of it. आज की प्राइसिंग ऑप्शंस मंत्र की खाली 19,500 प्लस जीएसटी है, खाली 19,500 प्लस जीएसटी है। एंड यहां पर सूत्र ऑफ वेव्स क्या है? सूत्र ऑफ वेव्स इज एलियट वेव, नियो वेव, वेयर वी फोरकास्ट। सो ऑप्शंस मंत्र इज गोइंग टू टॉक अबाउट लुकिंग एट बिग प्लेयर्स एक्टिविटी, नॉट फोरकास्टिंग। सूत्र वेव्स of waves is about neo wave forecasting methods, where you will learn about how to forecast looking at Fibonacci trading system, Ichimoku cloud, fast stage, 2 stage, faster retracement, and all of those things we will be doing in Sutra of Waves. और अगर आप ब्रह्मास्त्र के पार्ट हो, then you already have all of the above. If you are a part of Brahmastra plus time cycle plus mentorship sessions and those things. I'm open for questions, guys. Any questions here? यहां पर
वेव थियरी के हिसाब से कुछ चेंज हुआ मार्केट में, बात करेंगे मयंक बहुत क्लियरली। वेव थियरी के हिसाब से मार्केट में नथिंग हैज चेंज्ड एज ऑफ नाउ, इट इज इवेंट ड्रिवन मार्केट। एंड यहां पर बहुत क्लियरली विल बी लुकिंग एट दैट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। हम करेंगे एक एक्सक्लूसिव Q&A सेशन हम करने वाले जो पेंडिंग है फॉर ऑल द ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स, वी आर गोइंग टू डू दैट, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, वो करेंगे। ईएमआई की लिंक शेयर करिए प्लीज सभी के साथ में। एंड यहां पर आप साथ में ब्रह्मास्त्र त्रिशूल के लिए 10 के पे करके भी अपनी सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। ईएमआई लिंक शेयर करिए त्रिशूल मेंबरशिप के लिए। दिस मेंबरशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पीपल हु आर रजिस्टरिंग टुडे, because in this membership you will be getting research, so you learn and then you are also able to understand the market and you are able to trade for yourself by looking at the charts, wave theory, wave counts, and I'm going to update that बहुत क्लियरली। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है लोगों को और यहां पर आपको करना होगा। रविशंकर कह रहे सर आई अटेंडेड योर वेबिनार ऑन 14th March, levels you mentioned worked like magic. What stood out was the timing you mentioned, 11 o'clock, March 16 was simply superb. Never experienced that. That's the proof. रवि सोचिए अगर ये सब चलता है इतने अच्छे से तो क्यों ना आप सीखे और आगे बढ़े। So you have to take that step forward. I am open for questions. There is a question here, sir. I have registered for Trishul membership right now. What do I get? You will get access to Master of Technical Analysis video, which is for beginners with indicator basics है। You get access to, ये आज मिलेगा, you get access to 10 exclusive bonus videos for lifetime. Then you get access to pre-session video of options. Options का pre-session video एक मिलेगा। Then we do Saturday Sunday 10 to 4 option strategy कैसे फॉर्म करना है, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल देके क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो आप मंडे से अप्लाई कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू डू। देन वी विल बी लुकिंग एट Elliott wave, we'll build up on Elliott wave, we build up on Fibonacci, forecast करना है कौन से टू स्टेज फास्टर रिट्रेसमेंट क्या होता है, कैसे पता चलेगा ये मीनिंगफुल लो बन गया मार्केट का, कैसे पता चलेगा कि आपके जो स्टॉक्स गिर रहे हैं अभी तक वो रिवर्स होने वाले कि नहीं। यू नो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदीप बिल्कुल हेल्प करेगा अगर आपने ऑप्शंस नहीं किया है। एंड इफ यू वांट टू टेक दैट स्टेप, trust me, this is the way of moving forward and you can see how the levels are working. You can definitely do that. यहां पर आपको करना पड़ेगा सिंपल सिंपल स्टेप्स लेकिन डिसिप्लिन वे से। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू इट। मोस्ट ट्रेडर डोंट लूज मनी बिकॉज ऑफ बैड स्ट्रेटेजी, डू यू नो, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉलो देयर ओन रूल्स। और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है खुद के रूल्स पे, क्योंकि एक मेंटर ने उन्हें बताया नहीं है इस तरीके से करना यहां पर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द रूल्स, you follow the methods that a mentor gives you, and I'm going to give it across for everyone who are here in this Trishul membership, but you have to be there with me. Okay, Ravi has subscribed for Trishul, fantastic. यहां पर क्लियरली 10K का टोकन आ चुका है उनका। प्रदीप, आई एम वेटिंग फॉर यू टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। How many of you are really Nagendra, you can look at Trishul membership, it's going to be lovely. You are also getting along with that, you are also getting AK indicator which is not given to anyone else. uh, Sandipan is live example, he has been a part of it. He is saying sir I'm using it, change my trading pattern forever, it is awesome, वो लिख रहे चैट पे। एंड कौन सा 5 मंत्र है संजय, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया 5 मंत्रों के बारे में जो यहां पर लिखा गया है। मैं फिर से आपको बता देता हूं जो 5 मंत्र है, KST, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल, सुपर ट्रेंड, प्राइस एक्शन, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केल्टनर चैनल जो हम करने वाले हैं। There is a question here, sir. I'm a fresher. Shall I take Trishul or options mantra? See, if you are someone who is looking forward for 3 months of membership together, then you should take Trishul क्योंकि options में आपको next day से आप practice करके trade कर सकते हो. You can definitely do that. But Trishul के अंदर आप forecast भी कर पाओगे because I'll teach you Elliott wave and Neo wave rules also. मुथुराज, one indicator for scalp only. I'm going to teach you that. Expiry day पे क्या करना है, passive source of income अगर if you want to generate,
how to generate that parallel source of income along with if you're working using options and wave theory. I'm going to do that. Most important things are free. Then यहाँ पर free on YouTube channel, boss. If you think everything is there on YouTube channel from various people, everything is there on YouTube channel. Please follow them and ask a simple question to yourself: are you really making money by following everyone on YouTube channel? Have you checked the credentials? Have you checked the credibility? See, I just to tell you, I have authored a book. शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा. ध्यान देना. This book is published worldwide. ठीक है. Now tell me one thing. खिलाड़ी नंबर 1 जीता हूं मैं 37 times. I come on national channel. I have given us the proof by forecasting the market that is working. If you attended it, if it is working, don't you want to learn by spending like 20K for an options mantra? Is it that expensive? Then relying on the free content of everyone else. Free content may be there, लेकिन I'm teaching you over there. I'm showing you how it's working. Over here, I'm teaching you what you have to do for it. I'm showing you the levels. I'm showing you the application. I'm showing you Keltner KST है. I'm showing you time cycle का dates. But how can you apply it on your stocks for your portfolio? Is if you want to learn, then you have to learn, and without depending on me. I'm empowering you. This is known as empowerment. This is known as financial freedom. This is known as you are doing it for yourself, for your own portfolio, not for me. So if you think it's worthwhile to invest in yourself, invest in knowledge. 2008 mein I had a job. I lost my job with Lehman Brothers because the company went for bankruptcy. So I'm here in front of you because I believed into it. 2020 COVID happened. I have a resort Cloud9 in Lonavala. I own that place. Lockdown हो गया था दोस्तों. But I am here flourishing because it's working. I'm surviving because it's working. So the point is, I'm teaching you what works for me. If it works for me, it will work for you. डायरेक्टर साहब जो लोगों का आता जा रहा है यहाँ पर प्रकाश बिल्कुल all three in Trishul absolutely. Trishul का cost क्या है 32 plus GST. The pricing of Trishul is 2,17,000 plus taxes, which is including Trishul membership. It is only for 32 plus GST and the membership is 251 जो additional आपको अलग से पे करना. Yes. So एलियट वेव, नियो वेव, ऑप्शंस मंत्र, सूत्र वेव, ये सारी चीजें इंक्लूड है त्रिशूल के अंदर. ओके. एंड प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया प्रकाश. एब्सोल्युटली संजय, 10K का टोकन पे करके आप सीट ब्लॉक करिए एंड देन बैलेंस यू कैन पे इन ईएमआई विद इन 24 to 48 hours also. That's not a problem. Confidence come from preparation, not from profit. ध्यान रखना, प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस. प्रकाश, क्लासेस ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो रही है आपके वीडियोस के थ्रू. एक्चुअल 11-12 अप्रैल को यहाँ पर मैंने डेट डाल रखी है आपके लिए, लेकिन वो टाइम तक आई वांट यू टू प्रिपेयर सर्टेन थिंग्स, सो आई एम गोइंग टू गिव इट अक्रॉस टू यू. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द मेथड एंड द प्रोसेस which actually works, and I am going to teach you that method and process. There are many questions coming up again and again. कौन कौन यहाँ पर जुड़ना बाकी रह गया? आई एम जस्ट चेकिंग कौन कौन बाकी रह गया. आप लोग रुके क्यों? आप लोग जुड़िए ना फटाफट से फॉर दिस प्रोग्राम. त्रिशूल के बारे में, सर आई वांट टू जॉइन ब्रह्मास्त्र, कैन आई डू दैट? आई विल हैव टू चेक इफ वी स्टिल हैव सीट्स लेफ्ट. Then you can be joining Brahmastra. Brahmastra is edition of Trishul plus time cycle plus mentorship sessions with those things. So next Brahmastra session is going to be maybe 6-7 months later, not now, because हमारा यही सेशन 5 महीने चलने वाला. तो नेक्स्ट तो आपको 6-8 महीना रुकना पड़ेगा. Then only you will be able to do that. Shreyashi, you can be a part of Trishul now then, if you are not able to join Brahmastra. प्रकाश, does it answer your question? और यहाँ पर कौन कौन रह गए मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ. यहाँ पर अजय, अक्षय, आप लोग रुके हुए क्यों? ज्वाइन करिए फटाफट से. एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. रिंकी, रोहित, साहिल, संतोष, शीतल, शिवा, सोनल, लवली, आई कैन सी विक्रांत. आप लोग जुड़ते जाइए और कंफर्मेशन डालते जाइए. सर, विल इट वर्क इवन व्हेन देयर इज ongoing war? See, when the war is ongoing, volatility is high.
So I've been asking you to trade intraday. Do you think my levels are working? I'm asking everyone a question. Can you just tell me yes or no? Are the levels working? What I'm tweeting across? Yes or no? It's working, right? If these levels are working despite of the event, these methods will work. Levels work कर रहे हैं तो methods तो चल ही रहा होगा ना. I'm telling you, my levels are working like magic as always. Right, Rajesh? So these methods will work, of course. Sandeep, समझ में आया? Like always, today is also Ashima Sood is here. She has been an amazing mentee. She is a part of Hall of Fame. Hall of Fame is what we started for all our mentees who have been able to make it happen, and she is the part of it. I'm always proud to be having such mentee here. Ravi is saying, sir, after 14th webinar, I made 1 lakh rupees. Glad to know that. But remember, risk is there. Stop loss के साथ काम करना है. Nothing is risk free. That is very, very crucial. Remember that. This is very important. Without stop loss, you cannot trade the market. You have to have that stop loss in place. Okay? रिस्क है. लेकिन रिस्क रिवॉर्ड निकालना कैसे मैं सिखाऊंगा. मार्केट को सही तरीके से कैसे देखना है मैं सिखाऊंगा. सिंपल मेथड्स कैसे फॉलो करना है आपको, डिसिप्लिन कैसे बनाना है मैं बनाऊंगा. बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड. ट्रेडिंग इज सिंपल, फॉलोइंग द रूल्स इज हार्ड. ये चीज का ध्यान रखना है आपको. ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों. मेथड्स है, सिंपल है, टेक्निक्स है, लेकिन उसके ऊपर डटे रहना, बने रहना, रूल्स को फॉलो करना, दैट इज डिफिकल्ट. एंड आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन फॉर यू, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड. यहां पर यू हैव टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड. और जो जो जुड़ते जा रहे हैं यहां कंफर्मेशन डालते जाइए. यहां पर आई कैन सी दैट स्नेहल हैज जॉइंड अक्रॉस त्रिशूल प्रोग्राम, पेड द 10K टोकन, फैंटास्टिक. यहां पर विपुल हैज जॉइंड, lovely, glad to get you on boarded for Trishul program. Sir, I have paid 10K token for Brahmastra. Okay, lovely. Good to know that. यहाँ पर मनीष ने जुड़ गए यहाँ पर. नहीं नहीं, एक से मनीष ने, सॉरी, कृष्णा जुड़ चुके हैं यहाँ पर. ग्लैड टू गेट यू ऑल्सो ऑन बोर्डेड. कौन कौन रहेगा यहाँ पर? संतोष, शिव, सुशील, आप लोग जुड़िए फटाफट से, एक कंफर्मेशन डालते जाइए जुड़ने के बाद. नरसिम्हा, आई एम वेटिंग फॉर यू. मोहित, महेश, लक्ष्मी. पोल भी ऑन गोइंग है, आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. गौरव, साथ ही में चंद्रदास, बलवंत सिंह, आप तो ब्रह्मास्त्र में आ चुके हो, आई नो दैट. आनंद, आप भी जुड़ जाइए. यहाँ पर बहुत मजा आएगा. इट्स गोइंग टू बी लवली, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग टू हैव यू ऑल हियर फॉर दिस सिंपल क्लासिकल टूल ऑफ ट्रेडिंग, the concepts of price action with simple ways of looking at the market. Okay, one last question, guys. We are running out of time. Mahesh, आप already त्रिशूल के part हो. Glad to know that. And it has been working amazingly well. Especially the Keltner and KST. आनंद भोसले जो यहाँ पर अभी थे या शायद है कि नहीं, वो केल्टनर केस्ट के ऊपर कंबाइन करते हैं टाइम को, एंड अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उनका. दिस इज वन मेथड दैट वर्क्स ब्रिलियंटली वेल, ब्रिलियंटली वेल. Great, guys, and I think बहुत सारे जन जुड़ चुके हैं. Was it useful today's not master class, today's webinar, where we looked at these concepts for the first time on open interest volume profile, and we are going to do that. The live sessions are going to be 11-12th April, Pradeep. लेकिन आज से भी आपको काफी सारी चीजें मैं देने वाला, so you have to be a part of it. Poll is ongoing, guys. You can participate, continue to participate in the poll. Before I go on, a very quick disclosure. We are semi-registered research analysts. Whatever we are doing is purely learning perspective. Investment in securities market are risky. Registration granted is no way guarantee. Remember that. And this is a quick disclosure. Yes, recordings भी दी जाएगी आपको. Don't worry about it. So do not worry. I'll just go to that screen since you are asking those questions. I'll just share it across very quickly. The recordings will be there with you for the period of 3 months. You can definitely go through recordings. There will be a follow-up session also for Trishul participants, where we'll be looking at questions. You'll be also able to post your queries on the traders community. I'll guide you how to do that, so you don't have to worry at all. Pradeep. Okay, Ankit, glad to see you also here, and you are a part of Trishul, right? बहुत सारे जन है जो जुड़ रहे. It's always lovely. और जो जो यहाँ पर रह गए, ensure you are taking that step towards becoming a wonderful trader.
maybe today, maybe tomorrow, with someone else, but you have to take that step. You have to learn and trade. Market rewards people who understand risk, who understands the trading psychology, who learns these tools, and it is working for me. I'm honestly saying what works for me will work for you also. चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. आशीष क्याल signing off.